हाँ जी सज्जनों दोस्तों मैं हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ every single week ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ normally ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ anything related to properties ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ now we have started to do lots of different shows as you've seen before hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ and you liked also the show on finances ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ and hopefully for the next 2 to 3 weeks times ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ is going to be with Sonia Gupta ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ because ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ so I will try my best हिंदी बोलने के लिए हम तो कोशिश कर लेंगे ठीक नहीं बात पहला तो स्वागत है सोनिया गुप्ता जी कैसे हैं आप थैंक यू मैं ठीक हूँ आप ठीक है yeah. आप नर्वस तो नहीं हैं आप नहीं नर्वस तो नहीं हूँ हाँ नर्वस तो नहीं हूँ गुड ओके सो आप पहला जो आपका बैकग्राउंड है थोड़ा आपका जो बैकग्राउंड वो बताओ then we will go into the other side of it. So if you can explain your background that will be good first. So I'm British born London में पैदा हुई थी my family are from Delhi ठीक है जी mum dad and I have a younger sister छोटी बहन है ठीक है और I'm now a single parent okay मेरी शादी हुई थी 2003 में ठीक है जी मेरे 2 बेटे हैं and I'm now divorced 2021 मेरा divorce हुआ था okay so वे जरा शो हैगा यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਐਸਾ तो हम जितना भी ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਉਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ it's going to be done on relationships divorces because ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ then once obviously after when what happened with her you took this as a profession right more or less yes है ना यही हुआ था ना yeah. profession में after the what happened with you took this into a profession है ना yeah. so आपका जो जर्नी था स्टार्टिंग में आप थोड़ा उसका बताओ आपका जर्नी कैसा था how did it all start with you so मेरी arranged introduced marriage थी ठीक है तो my family introduced him हाँ and मैं इंडिया में रह रही थी जी फिर हम लंदन आ गए थे okay and I went into my job right. and my ex-husband वो family business में चला गया था with my mum and dad all right okay so what kind of family business is fabric was a fabric business okay so yes जी तो वहाँ से और एक बेटा था उस टाइम हाँ but marriage में there's always problems आ रही थी जा रही थी we were working through them हाँ फिर थोड़े टाइम के बाद in 2010 and मैं उस टाइम pregnant थी with my second son अच्छा मुझे लगा that actually ये जो शादी थी marriage था it wasn't जो आप सोचते हो और जो आप dreams लेकर सोचते हो शादी ऐसे होएगी marriage ऐसे होएगा it wasn't like that वैसे नहीं था मेरे लिए जी जी तो फिर मैंने कोशिश तो करी थी that हम दोनों साथ में रहे but there were problems जी दोनों तरफ से जी so फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बोला that I want a divorce हाँ उनका जवाब तो was simple no हाँ divorce नहीं लेना वही रहो it's not an option नहीं है divorce लेने का होता है हाँ and you're pregnant तो 2 बच्चे के साथ कैसे अकेले करेगी you know तू पागल है क्या सोच रही है all those kind of things जी तो मैंने कोशिश करी 2 साल like okay fine कोशिश करती हूँ पर वो बात बनी नहीं जी okay जी so then in 2012 ये decision लिया था that मैंने decision लिया था that हम साथ में रहेंगे पर बच्चों को पाल लेंगे दोनों एक साथ ठीक है because we can try जी पर वो बात नहीं बनी all right तो फिर और मुश्किलें आने लगी the relationship got bitter
ज़्यादा झगड़ना लड़ना एक दूसरे के साथ, it got very difficult. कैसा बिगड़ how what was the cause? कैसा क्या हो रहा था? What kind of troubles were you having? I don't really talk about that. हाँ But there were husband and wife. husband Wife, हाँ, जो you know, हाँ, problems. ठीक है So, understand and then 2012 में I left my job. ठीक है मैंने जॉब छोड़ दी थी ठीक है और मैं घर पर रहने लग गई and ठीक है। you know make the roti and आहो all that हाँ, kind of stuff. absolutely हाँ और I joined the family business. ठीक तो है। मैंने family business join करा yeah पर मुझे पता लगा और मुझे पता लगा like जब मैं वहाँ जाती थी मम जी। डैड के साथ ऑफिस में मैं like मुझे दिखा था मैं इस if I work with mum and dad and him मैं इस मैरिज में से कभी नहीं निकलूंगी because financially उनके हाथ में सब था मैं उनके साथ काम करती my ex husband उनके साथ काम करता था तो everything was tied together financially मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी तो फिर 2015 I think it was मैंने family business छोड़ दिया okay now that's a big thing right yeah आप अपना family business छोड़ो बिल्कुल it was a big problem my mom and dad were not happy बिल्कुल कुछ नहीं थे yeah of course so मैंने family business छोड़ा and I went back to my career back to my field and पर 2010 से शुरू और 2012 में ज़्यादा मैंने मम्मी पापा को बोला था I want a divorce but उन्होंने नहीं सुना था ठीक है so 2015 I went back to work and मैं धीरे धीरे अपना career build करने लग गई ठीक है and then 2017 ठीक है mum and dad और मेरा ex husband के साथ थोड़ा business में बात हो तो वो उसने business छोड़ दिया ठीक है and in 2018 finally 7-8 साल बाद मम्मी पापा ने बोला okay fine तूने divorce लेना तो ले सकती है हाँ kind of with their permission because जी। up until that point उनके साथ financially बहुत ties थे it was very difficult और वो you know the typical thing लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे हाँ यही है 2 बच्चे हैं कैसे पालेगी क्या करेगी all those kind of things so there was a lot of arguments with my mom and dad बहुत झगड़े होते थे मैं घर पर लड़ती थी वहाँ जाती थी वहाँ पर लड़ाई होती थी and dad बोलते थे घर जा यहाँ पर लड़ाई हो रही है I said कहाँ जाऊँ where can I go तो मैं तो गाड़ी में बैठ कर रोती थी for 12 years I cried in my car it was really and tough it's not even 1 year it's not even 2 years 12 साल कदी मैं रोई हां and ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ is to help you understand ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ it's not for abuse ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 100% ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਇਟਸ all about awareness ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ there's so many different things coming into this show ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ I can tell you this much ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ that you guys are going to be like Pawan ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਆ so continue from what you were just saying with your parents just ਤੁਹਾਡੇ parents ਜੋ ਥੇ I'm guessing they weren't happy then right from day one I think एक तो वो सोचे सोसाइटी क्या बोलेगी that's the first thing secondly ये सोच है दो बच्चों को दोनों माँ बाप चाहिए जी agree दोनों माँ बाप चाहिए हाँ, बिल्कुल, 100% पर एक घर में रहकर and दोनों खुश नहीं हो तो आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो क्या सिखा रहे हो तो मैं बोलती हूँ जब मैं उस हाल में थी I was not the best version of myself. Absolutely. I was unhappy. जी. रोती थी. हाँ. तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ क्या दिखा रही हूँ हाँ. Right? So ये change करना है लोगों की सोच है. You can divorce. You can be separate. पर आप दोनों बच्चे you can still
माँ बाप दोनों हो सकते हो हैं. सकते हैं, हाँ. ये नहीं होना चाहिए माँ से नहीं मिलेगा, बाप से नहीं मिलेंगे. Like you can still work together. Co-parent कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. If you want to. It's not नहीं हो सकता, हम कर रहे हैं. So the idea is that you need to think बच्चे को खुश होना चाहिए. और उस environment में जब आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, children are not happy. It's not the right environment. Absolutely. It's not even just the kids. You two as a couple also have to be happy. Because ਜਿਹੜਾ happiness ਆ, ਜਿੱਥੇ family ਦੇ ਵਿੱਚ happiness ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ. That's the point of getting married. That's the whole point. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ. ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ. एक दूसरे ना बोल चाल के हम कई अपनी फैमिली there's a lot of families जो हमारी सोसाइटी में मुझे पता है because हम उसके घर बेच रहे हैं, ठीक है. एंड वो जो लेडीज़ है ना, जो घर का लेडीज़ है, वो इतना डरती है, वो सोचती है हमारा हस्बैंड ऐसा करेगा, हमारा हस्बैंड ऐसा बोलेगा, जो वो मे बी द अदर वे अराउंड, हमारी वाइफ ऐसा हमारे पास करेगी, जो ऐसा करे. Because I've seen a lot. Believe me, जो मैंने देखा है ना, जो sometimes lady ने आपका knife के साथ ऐसा करके with the knife they've cut themselves, they've ripped their things apart just to put a blame on the husband. I've seen it firsthand. मैं खुद देखा है. I've seen it myself. So this is the reason why we are doing this show, so we can help you. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ. So going forward from what you was just saying, carry on and explain further about well, just about what you were saying as well. Yes. So women are troubled, but men are troubled too, because absolutely. Ladies will बोलते हैं, like माँ बोलते हैं, you can't see your children, बच्चे से नहीं मिल सकते. So this is wrong. This should not happen. बिल्कुल. You should always be able to see your children in every situation. हर हाल में बच्चों का मिलना दोनों parents से बहुत ज़रूरी है, unless there's other reasons, right? Absolutely, yes. So it's important for both people, दोनों साथ में काम करें. Even if you're going to get divorced, you can do it amicably. Absolutely. Yes, 100%. I totally agree with you. Because देखो, at the end of the day, जाते सी solicitor, when you're getting solicitors involved, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ part ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ. Yeah. It's going to go from one pot. At the end of the day, if it's yours or hers, it's still the same thing. It's still going to go out of your pocket. You could be spending that money on your kids. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ waste ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? I don't understand this logical of thinking, right? हम कई वकील होने, they're going to hate me for this, for why I'm telling you the truth, because I'm all about the truth. I'm all about bringing shows. ਜਿਹੜੇ show ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾਓ. Where you need to spend the money, spend it. Yeah. But where you can save it, imagine, okay, you guys want to start a divorce, किसी का divorce हो गया. You could send your children to a private school with that much money. Yeah. Yeah. Some divorces बहुत पैसे लगते हैं. I mean, my divorce, मैं तो court गई थी, and I had 5 hearings. 5 hearings. Or I lost every one till the final hearing. सब हारे मैंने until the end one. Every single one. Well, are you, if for the अपने जो श्रोते दोस्त देख रहे हैं, आप थोड़ा मोटा शेयर कर सकते हैं क्या आपका जो खर्चा था? क्या खर्चा था? No. नहीं कर सकते. It's too much. It's too much. Understand. Yeah. I understand. You being here is more than enough. I can't ask for anything more, because at the end of the day, what we are doing is we're here to help our society. I agree. We're here to help our culture. But I know, as a person in this profession, how much people will go through. And I'm not taking thousands, I'm not taking tens of thousands. It could be 6-figure numbers. Believe me. And that's your money that's going down the drain. That's not even that's your kids' money going down the drain. Right?
So try to be sensible. So let's now go on to the divorce side of things. Yeah. Right? Jira divorce that side saga. How did you feel? What was it with you at that time? I mean, did you go through this? What kind of struggles did you go through with the divorce side of things? So the biggest belly problem for mum and dad, unko samjhana, right? हाँ, वो तो है, हाँ. वो तो was really जी. difficult. हाँ. Then वो किस्सा खत्म हो गया. वो they agreed, and then हम दोनों साथ में रह रहे थे. बिल्कुल. हाँ. कोविड था बीच में. हाँ. तो COVID as well. Oh, okay. So कोर्ट सारा ऑनलाइन था. Online था. हाँ हाँ हाँ. मैं मम्मी पापा के यहाँ जाती थी. हाँ. वो I don't know where he used to जी. go. हम ऑनलाइन कोर्ट का करते थे. मैं कोर्ट केस हारती थी और उसी घर में वापस जाना. So the emotions were so hard. You know, वो जीत रहा था, मैं हार रही थी, और we're in the one house with the two kids. It was tough. Very, very tough. Yeah. Emotionally, I was finished. I was finished. And I wish this goes to end. This doesn't happen to anybody. If you can't get on, simply go your separate ways. Honestly, I don't understand. To see अपने रास्ते आप क्यों नहीं जा सकते? Why do you have to blow things up? क्यों तुसी अन्य चीज़ें blow करके जिद्दां सी अपने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? क्यों? Right? So with your divorce side of things, court side of things, Yeah. you went for how many? Did you say 5 hearings? 5 hearings over 3.5 to 4 years. 3.5 to 4 years. Yeah. एक साल भी सियाना हुंदा, ओ बहुत हुंदा. 6 months is more than enough. But you put up with 4 to 5 years. The thing is, आप जल्दी भी कर सकते हो, हाँ. but दोनों parties have to agree. Absolutely. तो एक is amicable, दूसरा नहीं है, तो नहीं हो सकता. Absolutely. But you can do it amicably. If you're amicable, reasonable हो सकते हो, then it's okay. बिल्कुल. I agree. Yes, 100%. Are you able to? I know you're saying you're not able to tell us, but just for the help our community, or the people that are watching, on what kind of costing I'm not asking you to tell me, but I'm asking you to give me some approximate figures. You're looking in the 5 figures for me. 5 figures. 6 figures. 6 figures. 6, yeah. 6 figures away. Wow, yeah. It's too much. It's too much. You can आप आराम से बैठकर मीडिएटर के साथ आप हिसाब निकाल सकते हो. You can come to an agreement. It's not worth going to court. Absolutely not. It's not worth going to court. So some के यारो देखो ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆ. ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ. You're wasting money on things, on divorces, if you simply can't get on. यार ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, right? And then you know what, I've got so many questions ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, and I got it out of her. She told me it was more or less 5 to 6 figures, and honestly I've seen people that have gone way into 6 figures because their houses are involved, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ involved ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? If there's kids as well involved. But ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, right? If you can't get on, just go your separate ways. Now Sonia, I'm just going to put the stop here on that side of things, and I'm going to go into the journey or the mentorship. I'm going to come back to this stage, right? Yeah. So from what you were telling me, you went out there and you studied some materials or something? So after my divorce, बहुत लोग message me, और उसका मैं बाद में बताती हूँ. But then मुझे लगा that there's a lot of people that need support. So I did a breakup and divorce coaching course. और मैं अब लोगों को mentoring and relationship coaching, I help them, support them.
the biggest question जो मेरे पास आती है should I get divorced? हाँ अब वो मैं उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती. बिल्कुल हाँ It's not my decision. It's not your हाँ पर मैं बिल्कुल लोगों को help कर सकती हूँ in making that decision. हाँ मैं question पूछूंगी certain questions that they can think about. सोच कर फिर वो अपना decision with a bit of strength, with a bit of empowerment, वो फिर decision step वो ले सकते हैं that they want to stay or they want to go. बिल्कुल Both लोग after they speak to me actually stay, which is nice. Absolutely. And that's what your goal should be. You guys should be able to stay because it's not just that. How I look at it is that ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ your families. It's not, you know, you've spent so much time together, then you've got kids, you've got so much money involved. You know, ਉਹ ਫਿਰ it's never the same. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ because it winds me up when I get properties to sell. Honestly, you won't believe it. जब हमारे पास property आती है and out of those 10 properties जो हमारे sale पर आती है 8 of them are divorce cases. Yeah. And you think to yourself, hold on, हाई तो तेरे 2 महीने पहले तेरा ब्याह होया सा. Your wedding was like 2 months ago. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ right? Yeah, look, there's two things. Absolutely. If you are deeply unhappy, नहीं खुश हो, नहीं कर सकते, then you have a right to be happy. बिल्कुल. हाँ, but if you can work on it, कोशिश कर सकते हो, फिर you should try. But if the bottom line is आप नहीं खुश हो and it's not the right environment for the बच्चे, then you know you should take some steps. Talking about बच्चे, talking हम जो kids है, children है, उसके बात हम कर रहे हैं अभी. जो children थे, single parenting. So आप single parent थे? I'm a single parent, yeah. हाँ single है ना. So जो single parent के लिए आपका कितना hard था? How hard was it for you? It's hard. It's very hard. अभी भी है. अब मेरे दोनों बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए. हाँ. इतने छोटे नहीं हैं. आप वो अपने आप को संभाल सकते हैं थोड़ा सा. You have 2 kids? I've got 2 boys. Yeah. 2 boys. ठीक है. But it's not easy. The school run, the school drop, the extracurricular activities, full time काम भी करना उसमें. हाँ. So it's not easy. ये कभी नहीं कहूँगा single parenting is easy. और आप co-parenting भी कर सकते हो. Get help from the other parent, the mom or the dad. देखो, if you stop somebody, आप बाप को मना कर देते हो बच्चों से मिलने के लिए. आप एक तो उनको अपनी responsibility से छुटकारा दे रहे हो, right? Why do that? और दूसरी चीज़ है अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए. तो वो बच्चे को देखेगा तो फिर आपको अपना टाइम मिलेगा. If आप उसको मना कर देते हो बच्चों से मिलने के लिए तो you're damaging yourself. Absolutely. So be amicable, work together. दोनों एक साथ काम करो. अपना टाइम आपको मिलेगा, उसका अपना टाइम मिलेगा with the kids, and then you have free time as well. और उसकी responsibility है बच्चों को संभालने के लिए, देखने के लिए. So उसको why are you letting him off? Absolutely. Yeah. See, this is she's talking from experience. You know how I always talk about experience. You may have the degree, but if you don't put that into experience, banda kise paase nahi ja sakta. And that's the reality of things. You may have the qualifications, but if you've not been through the experience and you don't understand, believe me, you're not going to know what the reality is. And we are talking reality. And this is why this is called Sachiyan Kahaniyan. In Punjabi, it's true stories. सच्ची कहानी का मतलब ट्रू स्टोरीज का. साको तकरीबन हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं ब्रेक में साथ. आप ये बताओ सेकंड पार्ट में हम बोलेंगे आपकी जो आपने मैं सभी पासे देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, मैं तो डेफिनेटली देखा था. आई हैड फैमिलीज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज दैट सॉ दिस एज वेल. मुझे लगता है ये पहला सगे जिन्होंने डिवोर्स पार्टी की सगी. हाँ जी, तुसी सुनिया होगा, यानी सैलीब्रेट किया सगा. इज दैट राइट?
That is right. That is right. Okay, and give them a bit of. We've got a minute and a half. Maria, to see das do. Just tell the apne srote a little bit about this divorce party जो आपने किया था. Divorce party. हाँ, तो मैंने September 21 में जी. मैंने अपने back garden में party करी थी. Back garden. Back garden. ठीक है. With my friends, my mum and dad. जी. उनको नहीं पता था उस time divorce party थी. All right. And yeah, my children, and we threw a celebration of life. Okay, and it went viral, huh? It went global. Divorce party वाले. मैंने हासा ही अंदाज़ा सुन के. चलो divorce party लोकी normally ब्याह ते करदे हुंदे आ पार्टियां ब्याह ते करदे आ पार्टियां करदे birthday ते करदियां किसी दा जन्म हो गया ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਗਈ ਸਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਈਟ You understand Punjabi what I'm saying, yeah? I understand. Okay, so आप ये बताओ जो आपने डिवोर्स पार्टी किया था जो आप बोल रहे थे वायरल होया था ना Yeah, globally होया था which area which country किस country में गया था ये everywhere really how did it get viral how did it happen so मैंने ना मेरा divorce I think March में हो गया था like final March ended March 2021 okay वो decree absolute आ गया था and so I was free तो my birthday is in July तो मैंने सोचा मैं जुलाई में like maybe do a party जी तो उस टाइम कोविड के रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे ठीक है तो जुलाई में सिर्फ आप 30 लोग को बुला सकते थे सच yes so मैंने अपने बेटे को बोला मैं 30 लोग में कैसे करूँगी like my circle's quite big yes तो वो आइडिया my birthday came and went खत्म फिर अगस्त में घर पे बैठे थे I said मैं really want to do a party मेरा बहुत मन है like I want to celebrate my new life तो लोग शादी करते हैं new life reception करते हैं this was my new life so I wanted to do a party to celebrate 12 साल से इतनी मुश्किलों से निकल के all the fighting all the arguments मैं सोचा I want to do something nice मेरा मन था मैं कुछ खुशी करना I wanted to celebrate my new life तो अगस्त चल रहा था and I said to Mikhail देखो I'm gonna my main friends मैं उनको सबको मैसेज करती हूँ like आप इस डेट पर फ्री हो तो उनका सबका जवाब आ गया yes तो फिर मैंने बोला save the date 3 हफ्ते में I planned this party तो there was I'm very colourful I like my colours pink obviously so I had a unicorn bouncy castle a unicorn cake I had a mobile cocktail bar a DJ Yeah, unicorn ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ that's the easiest way to explain it to you ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ unicorn ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ unicorn ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ it's a horse with the horn ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ we'll show you a picture of it right so continue you were saying unicorns are magical right the theme is that unicorns bring magic and joy so I had and then I had candy floss for the children I had mobile cocktail bar candy floss ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆ ਕੇ ਬਾਲ ਬੁੜੀਆ ਕੇ ਬਾਲ ਆਹੋ ਜਿਹਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ so I had all this sub like the bouncy castle marquee bar DJ and then I just called my friends so we had a big party we had good music तो एक मेरे दोस्त ने वो sash लेकर आया that says just divorced all right so I put that on और कोविड के टाइम चल रहा था तो my mum and dad are old my dad's not here anymore but तो उन्हें तो मना कर दिया था हम नहीं आ रहे so I said okay fine ठीक है I understand तो मैं तो बस मस्ती में like enjoying my party with my friends and then somebody said Sonia come here I said huh and my mum and dad were there
और फिर उन्हें मेरी तरफ देखा ना, I'm wearing just divorced, उनकी शक्ल तो उतर गई. They were like, ये क्या हो रहा है? They thought it was my birthday party. And I was like, my birthday's in July. This is September. So anyway, party हुई. It was lots of fun. Mum and dad, ठीक है. उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर पता चला था ये हो क्या रहा है. Anyway, so they came, they went. And then एक मेरी friend ने ना अपने social media पर डाल दिया था, you know, would you throw a divorce party? अच्छा. तो एक reporter ने उससे they reached out and they said like, we want to interview Sonia. अच्छा. So she said, is that okay? I said, yeah. So she gave her my number. फिर मैंने उससे बात करी and I told her about the party, क्या हुआ, कैसे हुआ, all that kind of stuff. And then मैंने पूछा ये जाता, where is it going to go? What happens? She said, हम तो like network पर डाल देते हैं, कोई पेपर ने उठा लिया तो it's fine, otherwise nothing. So I was like, ठीक है, देखूंगी क्या होगा. Like I was like, ठीक है, चलता है, whatever. मैंने कुछ नहीं सोचा, it was done. Yeah. I think एक हफ्ते बाद मैं ऑफिस में थी, काम कर रही थी, और my friend messaged me, उसका मैसेज आया, Sonia, you're in the mirror. I was like, huh? Mirror? In the mirror. I was like, what? There's a big picture of me and my friend saying, woman throws her own divorce party. Wow. After 17 years of marriage, woman throws her own divorce party. So I was like, oh my God, this is in the mirror. So obviously I was really happy. I was like, yeah, this is great. मैंने कुछ नहीं सोचा. And I told my mum and dad. And my mum and dad were like, you know, they didn't say much. Like, they weren't happy. कुछ नहीं थे. I understand, yeah. Okay, anyway, that was the Monday. And that was the UK. Next day, I'm in the office. My nephew, my cousin's son, उसका मैसेज आया, बुआ, you're trending. आप तो notifications पर आ रहे हो, Indian woman throws divorce party, Indian woman throws divorce party in India. अच्छा. So India में तो बहुत बड़ी बात हो गई था. एक तो पहले divorce नहीं लेते लोग, और ऊपर से मैं celebrate कर रही हूँ. So it was a really big thing. So then it was in India, and then Europe, and then America. Like if you Google it, Sonia Gupta divorce party, every country covered it. हम ये थोड़ा clip डाल सकते हैं? Yeah. दिखा सकते हैं? Yeah. Are you sure? I'm sure. देख लो. Yeah. I have nothing to hide. देखो, हम अभी आपको कितनी मिनट की होगी रफली जो अपने जो शॉर्ट्स है? I mean, couple of minutes, yeah, couple maybe, of seconds, minutes, yeah. ऐसा हम आपको बताएंगे जो divorce party. Before we show you the clip, DJ था? DJ था. Oh, बल्ले तेरे. Punjabi music is my favorite. Punjabi music is my favorite. Oh my God. Bouncy Castle सी, Candy Floss भी सी, DJ भी सगा, खाना पीना कितना सगा, समोसे, pizza, spring rolls, chili paneer. Oh God, I don't remember now. मुझे तो इतना याद नहीं है. And I had cocktails. अच्छा. और एक का cocktail का नाम था It's a Sonia Gin, उसमें gin था. और दूसरा का नाम था Decree Absolute, जो पेपर जो मिलता है when you get divorced, उसमें vodka था. अच्छा. And then there was others, there was mocktails as well. Oh my God. Oh ho. मैं उसकी picture दिखा दूंगी आपको. Oh my God. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ. Hopefully ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, hopefully you like the divorce ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ. So ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ. So what kind of ਜਿਹੜਾ media coverage ਸੀਗਾ? Yeah. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ media, what kind of media coverage was it? Like कैसा media coverage था? Newspaper था? मेरे था ना? So newspapers, The Mirror, and then Eastern Eye, The Sun, Sun. That were recent. India में there's a paper in Hyderabad called Declan Chronicles. ऊपर सलमान खान, नीचे सोनिया.
Salman Khan? Yeah. Oh, कित्थों निकल आया? I don't know. It was big news. It was big news. Wow. And अभी तक वो जो बता रही हूँ, Salman Khan, that was only last year, I think. So it keeps coming up. Magazines, all kinds. And my parents' reaction, उनको तो बस divorce ले लिया, दुनिया को बताने की ज़रूरत क्या थी? And I said, but I didn't plan this. ये तो हो गया. So now, उसके बाद, I think my mum is a little bit more. पहले तो she was very against the divorce. अब देखती है ठीक है मेरी बेटी और लोगों को help कर रही है. Whether it's to stay, understand the situation, you know, supporting people. Absolutely. And this is the reason. Okay, थानू थोड़ा मोटा हासा आंदा है. हमको थोड़ा सा हासा आ रहा है. वो थोड़ा नहीं बहुत आ रहा है. है ना बहुत आ रहा है. मैंने कहीं झूठ बोलना बहुत आ रहा है. पर you know, this is to help you. Once again, जो हम कर रहे हैं आपके लिए help के लिए कर रहे हैं. It is for your helpness. It is not okay for you to live in sadness. It's not. Right? When you take the vows, I think England ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ vows ਲੈਂਦੇ ਆ to sickness and health. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, we're going to stay with you till we're going to be partners till the day we die. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਮੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ together from two you become one soul, right? Yeah. And or wherever you go, mandir or wherever you go, right? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ you know ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that we're going to spend time. And it's sad, you know, people go through divorces, people happens. But why should you live in misery? This is what this topic is about. Yeah, and the divorce party, it was never a plan. Yeah. But wo viral hoke, I've now helped so many people. Absolutely. Because people are scared. People डरते हैं divorce लेने से. People डरते हैं लोग क्या कहेंगे. Yeah. I don't care. The aim was that I'm happy, my children are happy. So उसमें why should I not be happy? My life has the same value. Absolutely. Value है उसकी. So why should I not be happy in my one life? Absolutely. You should always be happy. खुश हर एक ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ. If you can't be happy in your one life that you get, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੜਦੇ ਝੁੜਦੇ ਆ. You know, it's like when I do shows on TikTok, I get people who come and troll me. I get it all the time. Death threats, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ death threat ਭੇਜਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਨੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. As long as ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. Reality ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ. So all I say to you, it's not okay. It is not okay for you to live in an unhappy life. So sometimes आपको पता भी नहीं चलता that it's not right. Yes. किसी ने मुझे बोला था that किसी ने मेरे से बात करी थी to help them. तो मैं किसी और को बता रही थी that this friend of mine needs help. तो उसने बोला सर तू और लोगों की हेल्प क्या कर रही है तो अपने आप को पहले हेल्प कर. And I was like what? And he was like you're not happy. And I thought you know what he's right. मैं नहीं खुश हूँ. I need to do something. गोरियां दी कहावत there's a जो गोरे हैं ना जो बोलते हैं वो कहते God help them who help themselves. पर जब तुसी अपने आप हुन for example आ मेरा गुरु मैनू ये समझाना हुंदा for example खाने पीने दा for example right तुसी अपने फैमिली नूं नहीं तुसी खिला सकदे फिर तुहानू दूजियां why are you feeding somebody else if you cannot even feed your own family
then why are you feeding somebody else's before feeding your own? So you must, if there's anything you need help with, if she's able to guide you, if she's able to support you, because she's taken this as a profession. In fact, जिन्ने भी तकरीबन professional business वाले हैं, they go down the route where somebody किसने हेरा फेरी कीती होंदे, then they go into that business themselves. They've taken that business on as a profession because they got so hurt, affected them so much. Then they said, you know what, I'm going to go into this myself. So this show is not just about properties, or where we just give you the latest property shows or latest tech show. I bring everything to you to help you. So Sonia di guidance chaidiya. If you need her help, you'll be willing to help them, right? Willing to guide. I'll ask questions that will and make you have think. to be truthful. You have to be honest, right? You have to. She's going to, and it's like a counselor. This is counselor ko janne. एक कुड़ी मैं किसी कुड़ी नू लियांदा सी शायद तुम चेता होवे इत्थे कुड़ी नू लियांदा सी है ना Sensi Waters no, and she's a professional counselor, and unless you don't tell them the truth, they're not going to be able to help you. No, she's not going to be able to help you. She's here to save your marriage. She's not here. Yes. She's not here to take the marriage away from you. All that money, all the preparations, everything that you've put into that marriage goes down the drain. And sometimes it's nothing. Sometimes it's just communicating properly. Communicating. That's it. And you need somebody, a third outsider, somebody who's a professional. Friends and family, वो कभी neutral तरफ से नहीं देखेंगे. For me, there's no vested interest. मैं तो black and white बता दूंगी, like what your options are. Absolutely. I'll ask you difficult questions. This is just the first of a divorce party. I just keep looking at that paper. मेरे सामने पे है paper divorce party that, and I think, well, क्या बात, शा गई. And coverage wise, you're saying it was a media, and there was Indian media. Every media. Wow. Every country. So what kind of platforms was it? I'm guessing it went onto Facebook and all that kind of stuff. Yeah, it was Facebook, YouTube, magazines, radio. I was on radio. I've been on radio a few times. It was just discussed very widely. सब में बात चल रही थी, especially in India. India was big. The magazine articles were big in India. मैं तुम्हें ये पूछना चाहना, थोड़ा experience where you've tried to help other people. I'm not asking who you've helped. No. मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ, आप हमारे UK में क्यों इतने divorce हो रहे हैं? Why is there so many divorces happening? Because आपका क्या सोच है? मैं बताती हूँ. एक तो times are different. Okay. जब 20-30 साल पहले शादियाँ हो रही थी. Ladies, right? They're a daughter. Then they're a wife. Then they're a daughter-in-law. Then they're a mother. Okay? उस बीच में उनको कभी मौका नहीं मिला अपने आप ढूंढने के लिए. And then they hit 40-50 और वो सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी चले गए, the in-laws are old or they're not here anymore. So it's just her and her husband. And they're strangers. एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं. Because वो तो पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में निकाल दिया. Looking after your mom or your dad or your in-laws or your husband and your kids. The kids go to uni and then you're lost. Yeah. This is why. And it's very important. मैं आज भी करना दुनिया देख लो जिन्ने भी साढ़े इंडिया दे तुसी बाबियां नु जाके पूछ लो जिन्ने साढ़े बुजुर्ग हैगे एनी ऐशकिया ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲ ਬਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ so what I'm trying to say is in India when they were going to the farms our ancestors our bujurg basically
They used to take food. The ladies used to take food to the farmers, right? To the husbands, because they spent quality time actually doing things from the heart. So let me ask you this question as well. Yeah. Social media, do you think this has a big effect on these kinds of things, like these apps and all these other kinds of stuff? Because it's so easy to go out there. If you have one little argument, I'm just gonna go to them, हम दूसरे पास चल जाएंगे. Social media has a lot to answer for, but there's advantages and disadvantages. Okay, Yeah. Advantages are लोगों को थोड़ी और समझ है what is right and what is wrong. जी. Disadvantage है वो सोचते हैं कोई नहीं ये नहीं चल रहा तो कोई और को ढूंढ लूंगी. And it's not that easy. The advantages are though जो लोग they're not being treated properly, जिन घर में मुश्किलें चल रही हैं, then they know there's support out there. The इसलिए I think divorce is rising more because लोगों को पता चल रहा actually this isn't right. ये जो मेरे साथ हो रहा है ये नहीं ठीक. Because जो लोग a little bit maybe not so socially aware, got married very young, वो तो सोचते हैं ये सब ठीक है. But sometimes it's not right. आप ये भी बताओ, आपका इसका मैं सोचना चाहता हूँ, जो हमारे जैसे अभी हमारा एक दिन शादी होएगा, ठीक है? वो होएगा हमारा शादी के दिन. And I'm a person that I want to live with my parents. The reason why I want to live with my parents, because उसके साथ कोई और नहीं है. I'm the only child. मैं अकेला child हूँ. And they're old. They need help. They're not, okay, at this moment, Rabdi Deadinal or Tika, they're okay. But one day they're going to come where they're going to need support and help. Yeah. And I'm a person thinking is, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? You can never be anybody else's. Right? Because if you can never love your parents, right? This is my parents are my best friends. And I'll always talk highly about them. I've always talked highly about my parents. जिथे मर्जी तुसी चल जाओ, my parents are my best friend. उन्होंने ना लड़दा भी आ, फिर सारा ना मैं रोज, साਡਾ प्यार भी आ, ਅਸੀਂ एक दूजे बगैर खा नहीं सकते. This is प्यार, right? So ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, आपका क्या सोच है? जो these days lady separate move होना चाहती है, कई लोग अभी ये भी हो रहा है, people are wanting to move back in together. There's some girls that are wanting to live with the families. Look, आपका क्या सोच है इसके ऊपर? विचार क्या है इसका आपका इसके ऊपर? I think there's no right or wrong answer. Okay, it depends on the circumstances. हर बंदे की is a different story. Okay, so look, as a woman, living with in-laws is not easy. It's not easy. Okay, so that's one hurdle. Why is it not easy? Why is it not easy? Let me ask you this question. Because I know the person that lives in me will be the happiest person. I know. Because my mom and dad will say, Ale chabi, hum mera kam hera mokriya, my job is done. Now we are going to go to India. Asi Spain jana, India jana, tusi dono raho. And we'll come here whenever we feel like it and we'll go, right? So that's for short periods of time, right? Yeah. So there's difference in थोड़े दिन के लिए and there's a difference in every day. Okay? And जो मैं भी कह रही थी that as a woman, you're always looking after somebody else. You're looking after your mom and dad, or you're looking after your kids, or you're looking after your husband, or you're looking after your in-laws. तो फिर अपने बनने का मौका कब आता है, right? So you're always responsible for somebody else. That's emotionally very draining. When do you take care of you? So it's good to look after your parents or your in-laws. But it's not the right thing to do. But it's not an easy thing to do. It's not an easy, I agree to that. You're always looking after somebody else. And there's always differences of opinion.
It's not always easy. Absolutely, and we'll touch up further on this subject. I think this is a good conversation to have. Maybe one day ਅਸੀਂ live show ਕਰਾਂਗੇ where we ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ lot of divorces are happening day to day. Courts don't have the space. They're that busy. Yeah, they are. I know for a fact, I'm in the property game, I see it every day where divorces are happening, grants or probates are get left out, getting given out like crazy, people are dying, and all these things are happening. There's not enough space at the moment. So we'll do a show on this. We'll do a show on this part of things. Episode 2, part 1 and 2. What have we got coming on that? उसके ऊपर हम क्या बताएंगे? Part 1 and 2 के ऊपर, episode 2 के. Relationships. हाँ. Dating. हाँ. Dating advice. आप किसी के लिए कोई किसी को husband चाहिए या कोई किसी को wife चाहिए आप ढूंढ देंगे? I do single events. मैं events करती हूँ. लो जी. But not matrimonial. वो फिर अपना like if they get on, that's fine. I do single events. मैं करती हूँ. ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਏ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ oh my god so okay no problem ਅਸੀਂ ਹੁਣ next week ਦੇ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ show finish ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ hopefully ਤੁਸੀਂ show ਨੂੰ enjoy ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ you know thank you Sonia ji ਤੁਸੀਂ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ and we will be back again with another show next week, same time, same place. Koshish karange next week the show see property. We've got so many shows lined up. You know, I'm trying to squeeze everything in, but make sure YouTube te upar jaake तुसी देख सकते हैं पवन सोडी टाइप करके YouTube के ऊपर TikTok के ऊपर Instagram के ऊपर तुसी देख सकते हैं. I'll see you same time, same place next week. रब रखा and from me and Sonia साढ़े तो प्यार भरी सत श्री अकाल. Thank you.